So this is Khushboo Oberoi, rank 139. I'll share only two information about her. She is the topper of public administration, so you can ask your doubts regarding that also. And she got 20 marks more than the cutoff in prelims. So obviously prelims ka strategy discuss kar sakte hain. And anything else you want to ask, you can ask her. Rest of the things will be shared by Khushboo herself. So let's have a huge round of applause for Khushboo Oberoi. Hi everyone, am I audible? Hello, so ma'am ने already मेरा छोटा सा introduction दे दिया, but still, my name is Khushboo Oberoi. I am from Delhi, and I got AIR 139 this year, and this was my second attempt. In my first attempt, I could not clear my prelims by 3 marks. So as ma'am said, मैंने काफी दिल पे लगा लिया. So I got 20 marks more in my second prelims, and I cleared my mains and I cleared my interview. I would like to share my marks with you first, and then whatever pointers I have written about my strategy, I'll be sharing that. And uske baad whatever queries you all would have, we'll surely discuss that. So as I said, the cutoff was 88 marks last year, and I got in prelims, and I got 107. In CSAT, I got 103 marks. In mains essay, I had 106, GS 198, GS2 115, GS3 was very bad, I'm not sharing my marks. GS4, I got 128 marks, and optional public administration, I think I have the highest this year. I got 294 marks, 135 in paper 1 and 159 in paper 2. And interview, I got 171 marks. Okay, so shall we start with prelims first then? Okay, so my prelim strategy, what I also learned from my first attempt, what I did wrong, based on that, my second prelim strategy, I have some pointers. One was that I used the 3-round strategy. In the first round, you start off with just whatever the questions जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं, उन questions से शुरुआत करें and उनको first round में mark करिए. Second round पे आप जब जाते हैं तो it's more of थोड़ा सा guesswork, and most of it you know. So like if you know 50% to 70% of it. And then third round पे based on your benchmark, you attempt questions. So for example, मैंने अपने फर्स्ट प्रीलिम्स में कोई बेंचमार्क नहीं रखा था कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी, विच इज द रीजन कि मैं क्लियर नहीं कर पाई कट ऑफ. तो मैं अपने सेकंड प्रीलिम्स में सोच के गई थी कि एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस आई हैव टू अटेम्प्ट, एंड आई थिंक एवरेज बेंचमार्क भी 85 to 90 क्वेश्चंस का होता है. तो आपकी अपनी बेंचमार्क होती है बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट दैट यू गिव. आपकी बेंचमार्क होती है कि आप कितने क्वेश्चंस कितनी एफिशिएंसी से करते हो, कैसे करते हो. तो मेरी 85 थी, एंड मेरे थर्ड राउंड में मैं ये देखती थी कि 85 रीच हुआ है या नहीं. सो अगर मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं अपने थर्ड राउंड तक, तो मैं उसके बाद इन्फॉर्म्ड गेसेस शुरू करती थी कि मुझे गेस वर्क करना ही है, 85 तो मुझे रीच करना ही है, चाहे मुझे उसके लिए थोड़ा तुक्का मारना पड़े तो भी आई हैव टू डू दैट. सो दैट वाज माय 3-round strategy, and as I said, my benchmark was 85 questions. Next is for my sources, I used a mix of my self notes as well as coaching. So I'm a Vision IAS classroom student, and उनका मैं मंथली मैगजीन जरूर पढ़ती थी करंट अफेयर्स के लिए. स्टैटिक के लिए मेरे पास उनके क्लास नोट्स होते थे, और उसके अलावा मैंने प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज लगाई थी. बट जो सेल्फ नोट्स हैं वो ये है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी. मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हिंदू पढ़ा है, बट आई फाउंड दैट इंडियन एक्सप्रेस इज मच मोर डिटेल्ड एंड इट हैज द एक्सप्लेन्ड पेज एवरी डे. आई थिंक अब हिंदू में भी आता है तो आई डोंट नो, बट इंडियन एक्सप्रेस हैज इट ऑल द टाइम. सो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, एंड मैं उसके खुद के सेल्फ नोट्स बनाती थी. अगर नोट्स रिपीट होते थे, जैसे विजन की मंथली मैगजीन में कुछ रिपीट हो रहा है, तो मुझे वो अपने नोट्स से डिलीट करना होता था, तो मैं कर देती थी. बट अगर आपके पास बैलेंस होता है दोनों सेल्फ नोट्स का एंड कोचिंग नोट्स का, तो उससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा बन जाता है. सो आई वुड श्योरली सजेस्ट दैट अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं. अगर आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बट सेल्फ नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसके अलावा
एनालिसिस व्हेन वी रीड टेस्ट सीरीज, तो मैंने टेस्ट सीरीज के लिए भी विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई थी. आई थिंक ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज होती हैं, पहले सब्जेक्ट वाइज पेपर्स होते हैं एंड देन उसके बाद एंड तक आते आते यू हैव फुल लेंथ टेस्ट सीरीज. सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. आप जब मॉक्स लगाते हैं तो आपको एक आइडिया लगने लगता है कि आप कितने क्वेश्चन जब आप करते हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेम्प्ट, आपकी एफिशिएंसी कितनी बैठ रही है. उससे आपको आइडिया लगेगा कि अगेन आपका बेंचमार्क क्या होगा. बट ऑल्सो आई वुड से दैट जब आप एनालाइज करते हैं अपने टेस्ट सीरीज को, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग. जब वो एनालिसिस शीट आती है, इट्स वेरी, मतलब एक एक पेपर की बहुत सारे पेजेस होते हैं. तो अगर आपको लग रहा है आई एम सॉरी, अगर आपको लग रहा है कि जो एनालिसिस में कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा इन डिटेल लिखी है, जैसे स्पेशली मेरे साथ ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में होता था कि आप हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, उन्हीं सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, प्रीलिम्स मॉक्स जो होते हैं, अगर आप वो एनालाइज करने लगेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है. एंड इतना डिटेल्ड इट्स वेरी लेस कि पूछा जाए, और इतना आपका माइंड स्टोर भी नहीं कर सकता. सो आई वुड रादर सजेस्ट आप खुद एक इन्फॉर्म्ड, मतलब इतना आपने पढ़ा होगा उस टाइम तक, जब आप टेस्ट सीरीज देंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं, इतना डिटेल में पूछा जाएगा या नहीं. सो प्लीज अवॉइड इट इफ इट्स अवॉइडेबल. एंड नेक्स्ट आईड लाइक टू से दैट जब आपका पेपर बहुत पास आने लगता है प्रीलिम्स का, तो उस टाइम पे आप जो आपकी ये जो सारी एनालाइज शीट्स होती हैं, अगर आप उनको रिवाइज कर रहे हैं उस टाइम पे प्लीज स्टॉप रिवाइजिंग स्टैटिक. मतलब आई एम सेइंग 1 वीक प्रायर टू प्रीलिम्स, बिकॉज स्टैटिक में बहुत सारा अगेन बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होता है. तो आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मुझे कुछ नहीं आता, बट ऐसा नहीं है. रीड द करंट पार्ट, करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए, वो आप जरूर रीड करें. स्टैटिक जो हुआ है 1 वीक पहले तक, ग्रेट, गुड इनफ. जो नहीं हुआ है लीव इट. एक क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई और अटेम्प्ट हो जाएगा, बट लीव इट बिहाइंड. आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते. उसके अलावा वेरी शॉर्ट नोट्स इज समथिंग आई अबाइड बाय. सो आपको मतलब मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं क्लास नोट्स बनाती थी, फिर मैं क्लास नोट्स को बहुत बार पढ़ने के बाद अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाती थी. एंड शॉर्ट नोट्स मीन्स दैट शॉर्ट दैट आप प्रीलिम्स से पिछले वाले दिन वो सारा पढ़ पाएं. सो इट मीन्स लाइक 10 पेजेस, मैक्स 20 पेजेस, दैट इज द अमाउंट ऑफ शॉर्ट नोट्स यू हैव टू मेक, ताकि आप एक दिन पहले वो सब रिवाइज कर पाएं जो मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं. आई थिंक आपको एक बार पहले शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड देन यू कैन मेक अनदर सेट ऑफ इवन शॉर्टर नोट्स विच इज एग्जैक्टली प्रीलिम से बिल्कुल पास. So that will be very helpful. And if you are, I think most of you are attempting next year, right? So for that my strategy was कि जब prelims आ रहा होता है तो उससे 3 months पहले I stopped, मतलब I completed all my syllabus 3 months at max, I think. So you complete all your syllabus, mains plus pre-ka, and then 3 months are only dedicatedly for prelims. You only do test series, you only do previous year question papers, and you only do analysis, and you revise again and again. So that is one thing. और उसके अलावा आई थिंक अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो एटलीस्ट 30 मॉक्स, एटलीस्ट कह रही हूँ मैं, 30 मॉक्स तो देने ही हैं. उससे आपको अगेन आपकी स्ट्रैटेजी पता चलेगी, आप कैसा अटेम्प्ट करते हैं, कितना कर सकते हैं. और अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज वेरी लेस. तो वो आप धीरे 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 ही बढ़ाएंगे जब आप मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर अटेम्प्ट करने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. उनसे आपको सिलेबस पता चलेगा और I think they come closest. And इस साल का prelims was very different as we all saw. तो इस साल के prelims के हिसाब से अपनी strategy को थोड़ा mold कीजिए. Elimination is not really an option now, not that big an option now. तो उस हिसाब से आप अपनी strategy को भी mold कर सकते हैं कि फोकस मोर ऑन स्टैटिक. स्टार्टिंग में जब आप नोट्स बना रहे हैं, जब आप क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक को इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको इतना ज़्यादा एलिमिनेशन पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े. एंड अनदर थिंग इज जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था, विच इज टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो मैं मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी थी एंड जब मैं एक्चुअली अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को देने गई पेपर के लिए, तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर पेपर ईजी आएगा तो मैं 75 प्लस समथिंग कराऊंगी क्वेश्चन, ऐसे ही फेयर एमी गेस करके. बट पेपर बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वहाँ पे पेपर डिफिकल्ट ही लगता है, आपने कितना भी पढ़ो. और मैं वहाँ देने गई एंड I couldn't manage time, I couldn't manage my stress levels, and I attempted some 73 questions, I think. I missed the cutoff by 3 marks, but that was a big blow to me because मैं mocks में बहुत अच्छी थी. So I would say आप
प्रीलिम्स से पहले स्ट्रेस लीजिए, पूरा स्ट्रेस लीजिए, सबको स्ट्रेस होता है, बट जिस दिन आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उस दिन आप इस थॉट के साथ जाइए कि पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी है तो सबके लिए इजी है, बहुत लोग क्लियर करेंगे तो व्हाई नॉट यू, यू कैन ऑल्सो क्लियर इट. सो एंड टाइम को मैनेज करके जरूर चले. अगेन देयर इज अ 3 राउंड स्ट्रैटेजी दैट आई डिस्कस्ड, इफ यूड लाइक टू फॉलो दैट. सो एंड ऑल्सो अगर किसी को पहले प्रीलिम्स जीएस के बारे में कोई डाउट है तो आई वुड love to address that, and then I'll shift to CSAT. No. Okay, so CSAT में I 3 months before the prelims I started doing CSAT as well. मैं हफ्ते में 1 या 2 बार CSAT के पेपर्स लगाती थी. स्टार्टिंग में आप CSAT के सारे फॉर्मूले इकट्ठे कर लो, आप CSAT का जो भी आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, एंड पोस्ट दैट आप आई थिंक CSAT का बेस्ट सोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ओनली. आई वुड नॉट रादर से कि मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दैट, बट आई थिंक बेस्ट सोर्सेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप उन्हीं को टाइम मतलब पूरे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बैठकर उसी टाइम ड्यूरेशन में कवर कीजिए, एंड उससे आई एम गेसिंग, आई एम होपिंग दैट आपका CSAT निकल जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी कम टू मेंस. सो मेंस के लिए first for mains I joined 2 test series at one time only. I joined Vision IAS and I joined Forum IAS, and अगर कोई question दोनों में repeat होता था by chance तो that was my cue of thinking कि ये question बहुत important है and इसको मुझे बहुत अच्छे से करके जाना है. That is one thing. Second is please use a lot of diagrams and graphs. That is what makes your answer paper different than others. So इट कैन बी कोई भी छोटा डायग्राम जो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत स्टूपिड डायग्राम है, ये क्या बनाना है, बट वो भी बनाइए. अगर सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन है तो आप सिटीजन चार्टर का एक सैंपल बनाकर आ जाइए, इवन दैट इज अ डायग्राम. सो दैट मेक्स योर आंसर पेपर अ बिट डिफरेंट देन अदर्स. इंडिया के मैप, वर्ल्ड के मैप्स, वेर एवर इट्स पॉसिबल यू हैव टू मेक दोज मैप्स. लाइक इफ दे आर आस्किंग अबाउट कॉटन इंडस्ट्रीज, यू मेक इंडिया का मैप जल्दी से एंड यू मेंशन द कॉटन इंडस्ट्रीज. एंड गिव मी अ सेकेंड, I'll rather show it to you. Is it visible? Yeah, it is. So these are the maps that I used for it. It is an example. So this is BIMSTEC. If it was asked in a question, they were just asking about Arctic Ocean and draw that map. It is so easy. Someone would think, yes, me kya hi banana hai, but I made it. Then I was asked about cultural traditions. I made this. Then we come to अर्बन फ्लडिंग. डिजास्टर मैनेजमेंट में तो बहुत ज्यादा आप मैप्स और डायग्राम्स यूज कर सकते हैं. प्लीज हर डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में बनाकर आइए. सो दिस वाज माय डायग्राम फॉर अर्बन फ्लडिंग, and this is for regions prone to illegal sand mining. This is just an example. I used to draw a lot of diagrams, a lot of graphs. Okay, graphs nahi, maps, sorry. ठीक है. उसके अलावा अपने आंसर्स में आप जितना भी किसी की रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं. सी वी आर ऑल लेमन एट द मोमेंट, सो आप किसी कमिटी ने कोई रिकमेंडेशन दी है, सेकंड ARC ने कोई रिकमेंडेशन दी है, किसी कमिटी ने, किसी कमीशन ने कुछ बोला है, दोज आर योर पॉइंटर्स. Either they come in your intro, not intro, either they come in your conclusion, either they, if required, come in your intro, or they come as the first point. Like if you're writing prose and some committee has recommended it, that is the first point, that this is the advantage of this scheme as recommended by this body as well, this commission as well. उसके अलावा आपका आंसर का लेआउट, मैंने श्रुति शर्मा मैम जो लास्ट ईयर टॉपर रही थी उनका भी टॉपर स्टॉक देखा था. सो दैट इज वन एडवाइस, प्लीज वॉच टॉपर स्टॉक्स, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सो मैंने उनका जब देखा था तो उनका एक लेआउट है लिखने का जो मुझे भी बहुत पसंद है. हर लेआउट इज यू, आई वुड नॉट बी एबल टू राइट इट हियर, गिव मी अ सेकंड. राइट, नो, so her layout is that if she is giving an answer, she writes the first point like this, and then उससे थोड़ा आगे सब heading करके she does example and she writes like this. This is her layout, and it's very very good to show the examiner कि मैंने यहाँ example mention किया है, because वो अगर आप साथ साथ लिखते जाओगे तो examples get missed. तो आप अगर अलग से लिखोगे examples get shown and you get extra marks for that. तो अगर आप examples लिख रहे हैं आप ऐसे लिखिए. And another advice is please write as much examples as possible. Examples इकट्ठा होते हैं न्यूज़पेपर से, टॉपर कॉपीज से, और उसके अलावा मैगजीन्स, अगर आप कोई करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ रहे हैं उनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे.
serving civil servants, retired civil servants, or even if some scheme is valid, तो वो सारे examples आप कहीं ना कहीं किसी question में, हर क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए, या एक कमिटी रिकमेंडेशन, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए दैट मेक्स योर आंसर नॉट जेनेरिक. सो दैट्स दैट. उसके अलावा एक क्वेश्चन था जो विजन की टीम ने मुझे लिख के भेजा हुआ था, दैट आई शुड बी डिस्कसिंग दैट वन शुड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस और वन शुड अटेम्प्ट लेस, एंड दोज क्वेश्चंस शुड बी बेटर इन क्वालिटी. माई स्ट्रैटेजी इज प्लीज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप अपना 100% भी दे देंगे ना एक क्वेश्चन में, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. रादर अगर आप कोई क्वेश्चन में आधा पेज भी भराएंगे तो शायद आधा या 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा. एंड I hope you know that आधा और 1 मार्क्स से भी your rank gets changed, your selection matters. So हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है. मेरे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था सेल्यूलोस का. I don't know आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है नहीं. हाँ, so there was a question on cellulose and me and so many other people that I know didn't know anything about that question, but we attempted it. We wrote half a page, we wrote 1 page, whatever. Write something, attempt each and every question. उसके अलावा मेंस में यू राइट थर्ड पर्सन व्यू, यू नेवर राइट योर ओपिनियंस. नो वंस आस्किंग योर ओपिनियन, प्लीज डोंट राइट दैट. राइट अबाउट कि किसी कमिटी ने ये रेकमेंड किया है, या फिर ये इसलिए नहीं होना चाहिए, ये एक्सपर्ट बॉडी ये बोलती है. And even when you write the conclusion, it should be balanced, and you should not be taking sides. You should never be a political person, or even in general you should not be taking sides. आपका conclusion बहुत balanced होना चाहिए, कि आप बहुत scientifically सोचते हैं, आपका बिल्कुल एक logical viewpoint है, इस हिसाब से आपका conclusion होना चाहिए. And something that I used to write, I used to paste posters on my almiras. One of the things that I used to write for mains was that 1 more mark per question means 20 more marks per a paper, and that means 100 more marks in the exam. And I hope you know that 100 marks changes the game. It makes you clear the exam, it makes you get topmost ranks. So for every question that you're writing, for every answer that you're writing, write a unique point, something that's different than someone else. That is the main suggestion that I'd like to give. So when we talk about papers in general, I would like to talk about ethics, and I have some pointers on essay. Yeah. So ethics mein, I would like to say that firstly start with case studies. That is how you finish your ethics paper, because even last year mere time pe the paper was too lengthy, and if you start with section A, you'll try to give your best for section A, but section A में 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एंड केस स्टडी में सीधा एक क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का होता है. सो फिनिश योर केस स्टडीज फर्स्ट एंड देन शिफ्ट टू सेक्शन ए. सेकंड इज स्टार्ट विद कोट्स, स्टार्ट विद philosophies. I'll give you an example. Wait, these are, I collected quotes and for everything. So these are my value quotes. For if I get a question on values, I'll be writing this. This is just a quote on values. I used to collect from Google Images, whatever quote I liked most. If there's a question on honesty, I'll have a quote on that. If there's a question on transparency, I'll have a quote on that. I had a quote on everything, so that my answer always starts with a quote. And it's different than others. That is how you make your answer different. So, for example, this is a quote on integrity. And what else? I have really short notes for ethics. These are my definitions for ethics. You make a definition for each and everything in ethics. For ethics, there's also a red book by Forum IS. That is a very good book that I like to recommend. So you can read that. It's called red book only. So definitions, मैंने उधर से या इधर उधर जहाँ से भी I collected a definition for everything. There's a definition on morals, aptitude, and whatever else that I could find. So cognitive dissonance. And when you make examples, you make examples. One is a normal example, that is कि किसी civil servant ने कहाँ integrity दिखाई, वो वाला example. And one example you make for your life, क्योंकि कभी कभी ethics में question आता है, give an example from your life. तो अब उस टाइम पे सोचने बैठोगे तो याद नहीं आता है क्या किया था, कब honesty दिखाई थी. तो इसलिए खुद से पहले से याद करके जाओ कब किया था, कुछ अच्छा किया था life में, कब किया था, और वो पहले ही लिख के रख लो. So that is something else. Also conclude with something different as well, like conclude with schools of thought or philosophies. For example, 7 Sins by Gandhi, if you've read, that goes in a lot of answers. Like if you're writing a question on corporate governance, you can write commerce without morality is a sin, as said by Gandhi ji. So those kind of things make your answers different. And give as much examples as possible in ethics papers, very, very important.
I would like to show you my ethics copy. Please give me a second. Yeah, this is where it starts. So this is a question. I started with a quote. I also put in a diagram. And then whatever was asked, I used to start in all of my GS answers. I used to start with a heading कि क्या पूछा है. So there's a heading, then there's yes and no for that. So yes में मैंने पहले लिखा, and as you can see my example comes here as a subheading. उसके बाद I shifted to challenges. These are my challenges. Again I made it into a box so that अलग से दिखे कि ये एक heading है कि अब मैं challenges शुरू कर रही हूँ. And उसमें मैंने अपने pointers लिखे. Again, my example comes as a subheading. Then there's a conclusion, and if I could, I made a diagram. So I have 2 diagrams in one answer. That was my way of making my answer different. Okay. There are a lot of questions like this. I don't think the copies are, in general, any copies are available for Vision's website. Wait, let me shift to my case studies. Here now. Yeah, so this is a case study. So for case studies, I'd say that first, if you are understanding that उसके अंदर वो कोई वो नहीं पूछा कि ethical dilemma क्या है. अगर question में डायरेक्टली नहीं पूछा है तो अपने इंट्रो में ही मेंशन कर दो कि ये क्वेश्चन इस बारे में बात कर रहा है कि ये एथिकल डिलेमा है, ये वो. और अगर पूछा है तो फिर इंट्रो में समरी लिखो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, तो गिव अ समरी टू द एग्जामिनर दैट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट दिस एंड दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ मी. एंड द लेआउट गोज लाइक यू राइट ऑप्शन ए. So if there are options given or you have options in your mind itself, you write option A कि ये एक चीज है जो कर सकते हैं. फिर you write cons, pros, you make a list and then you start writing that. I think मैंने ये ऐसे नहीं किया. Please give me a second. You can write stakeholders also in the introduction if it's not asked as a separate question in the case study itself. Then you can write it in the introduction, or else you make a list like this. You say stakeholders involved and then you write me and मेरा क्या क्या काम है. Then you write DSP, then you write उनका क्या क्या काम है. ऐसे करके you make the stakeholders list. Then there's ethical issues involved. इसमें examples का scope थोड़ा कम होता है, but if you can, please do. And I ended on a recommendation again. DK Basu guidelines say this. So again, my way of saying कि somehow my answer is different. So that was about ethics. Let's shift to essay now. For essay, Yojana, Kurukshetra, first pages, monthly edition. You don't have to read the edition. Please read the first pages of both Yojana and Kurukshetra. Every month there's a new topic that they cover. For example, if they're talking about rural development, it will cover introduction, conclusion, body, full in the first page itself. And those first pages are sometimes completely picked up and written in the essays. They are that good. So so for example, once they had women empowerment, and they wrote a beautiful paragraph on how a woman's life is a full circle. She's born and then she gives birth and aise karke. So those are things you can directly pick up and put in your essays as introductions. So that is one thing. Please read Yojana and Kurukshetra's first pages. Next is the WWWH strategy. I think you all must know. It's the what, when, where, or why and how. Thank you so much. That strategy. So for example, very simple example, if I'm asked honesty is best policy in an essay, first I'll write what is honesty. And this is a very simple example. First I write what is it, then I write why it is the best policy. I give examples for that. And uske baad, examples also can be in many domains. You can make domains for that. So social examples, political, economical, cultural, the special. I hope you know, guys know there's a special. This is an acronym. This can be used in GS, this can be used in essays, whatever. So S stands for social, P stands for political, E stands for economical, C is cultural, I is international relations, E is environment, and L is legal, if there is any scope of writing any laws. So that's an acronym that you can use in GS, in essay, whatever. So also one thing that I did in my essays was, when you have written that why honesty is the best policy, if you have, because essay में बहुत सारे पेज लिखने होते हैं, तो you can take the negative stance. For example, what will happen if honesty is not followed? This is a negative stance that is not directly written, but that is something that I am bringing.
So you give examples for that then कि कहाँ पे honesty use नहीं हुई थी तो ये हुआ ऐसे हुआ. And उसके बाद the last one is how to ensure. And then you write some. So in intros and conclusions, in both, I would say that write some in intro. Write some anecdotes. Like I used to have anecdotes of. I'm forgetting all the names. There's Gautam Buddha, which is most famous. उसके बाद APJ Abdul Kalam का कुछ या फिर there are many more. There are many inspirational personalities जिनसे आप शुरू कर सकते हैं somehow. उसके बाद when it comes to the conclusion, you can conclude with big quotes. Give me a second. Please give me a second. No. Right. It's not this. Yeah, so for example, you can use this as a conclusion. These are things, if it's valid, then there's this is a Hindi, and when you write in Hindi, you write in English, the translation also. So it fills half a page and it can be a very good conclusion for you. So you can use conclusions like this. You end with quotes, you end with something that is different, not just a summary of what you've written. Please don't write summaries in conclusions, never. Okay, next. Prepare some generic intros, conclusions, and quotes. So prepare for health, prepare for education, prepare for women, elderly. You prepare for science and technology. Ethical essays के लिए जो आपका ethics का paper है and जो essay होता है उसमें काफी overlap हो जाता है. अगर ethical essay आया तो आप उसमें बहुत सारा content use कर सकते हो. So you prepare that, and you prepare for environment. These are some generic topics you should have matter on when it comes to essay. And then when you write essays, write 2 to 3 paragraphs in one page. Your paragraphs should not be too small, and they should also not be कि बस एक ही paragraph में चलता ही जा रहा है. So have 2 to 3 paragraphs per page in an essay. And try to write, when you write essays, I think there's 12 pages per essay. So don't think कि 10 pages लिख दिया तो भी मेरा essay की quality बहुत अच्छी है. You have to cover all 12 pages. Have that framework in your mind कि पूरे 12 pages भरने ही हैं. कैसे भरने हैं, that is up to you. कैसे क्या लिखना है, कितना content add करना है, but करने हैं. Okay. Is there any PubAd student here? First. Okay. So I'll just discuss my PubAd strategy in short. If it's valid for you, great. So first is, I think, which is valid for all the people. In optional, you always try to do linkage in paper 1 and paper 2. That is very, very important. For example, in public administration, if you were talking about 73rd, 74th Amendment Act, you write Likert System 4, participative democracy. And second, optionals are always to be written with specific knowledge. If your optional is overlapping with the GS, you don't just write like, if it's sociology, you don't just write like a society paper, or if it's public administration, you don't write it like a polity paper. You have to mention thinkers in it. You have to mention committees, commissions, whatever is valid, you have to mention that. Schools of thought, you have to mention. And in optional, I used to write in a points and para format. When it comes to my GS answers, I only mostly wrote in points because pointers are easily visible. But when you're writing an optional paper, you write paragraphs like big introduction paragraphs, then you give a paragraph if needed, and you write examples as pointers. That's all. My sources were, I joined Trust IAS online coaching, and I followed Prasad and Prasad for thinkers. Okay. Are there any questions related to anything, prelims, mains? He'll give you the mic. Ma'am, for modern history, we used to follow spectrum, and I used to follow spectrum and class notes. Is there any another sources that are required for covering modern history? No, I also used to use spectrum. I read spectrum, and I read my class notes, and apart from that, nothing, because you also give test series. So if there's any value addition, you add that to your notes. And ma'am, world history, we need to follow the full book of Arjun Dev of world history, or we should rely on the notes only? I would not be able to comment on that because I was a classroom student. I only did class notes for world history. I have not followed any book at all. And ma'am, sometimes it is, I have seen in many of the interviews of the toppers that they leave the medieval history.
they don't read. Many of them said that we have just left the medieval history, we don't get some time of covering that. So is it worth of leaving the medieval history, or we should cover it somehow, the important questions or last previous year questions? For prelims? Yes, ma'am. No, I don't think I would recommend leaving it. Medieval history is a big part of the syllabus. Yes, You ma'am. should be covering it. I mean, if you have a hard time remembering it, then you can try to remember only the main pointers, the main topics, but I would not recommend leaving it completely. And how to keep a track of optional with the GS? I think, so for me it was quite different because I covered my GS first and then I did my optional, and then I also had a fair idea of what optional I want because I'd already read polity and I knew that I'm interested in that. That's how I chose my optional. But if you are doing GS and optional together, I would say that you can make a daily schedule and you can have different timings for how much you have to cover. Optional is a big part of your main syllabus, but if prelims is coming closer, then you shift to prelims completely and you study GS. But if prelims is far away, then you try and cover your optional first as a priority because optional is a big part of the main syllabus. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Firstly, congratulations, ma'am. Thank you so much. Ma'am, are 8th class NCRT for modern history are important or not? They are important, but I would say that your NCRTs should get finished in the starting of your journey itself. Later on, you shift to the advanced books like Spectrum. But for medieval and ancient history, I would still say that NCRTs are valid even later on in your journey. For other subjects, no, don't read NCRTs later on. And ma'am, for GS2 exam in mains, For- which book? For polity, Yes, ma'am. Lakshmikant. Yes, ma'am. Thank you. That's all. Thank you, ma'am. No other book. Thank Just you. Lakshmikant. And if you have class notes, but class notes also have an overlap with Lakshmikant. So I think if you do Lakshmikant and read it very nicely, you make good notes out of it. That's enough. Thank you, ma'am. Thank you. We'll get the mic to you. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Offline. Both of you have kept your mics down. एक तो choose करो. Yeah, you say first. Ask. Ma'am, offline class or online class? Offline class is helpful, or online class is? I had online classes and I particularly enjoyed it as well. So for me, it was not an option. I was COVID batch. So there was no option for offline. Online class is better. Online good. class is good. Even if you are not available, you can record the classes and you can see it later on. और मैम टेस्ट सीरीज के लिए Test series, prelims. प्रीलिम्स नहीं, test series तो I would say कि if possible तो आप वो तो offline भी attempt कर सकते हैं. मैम मेरे घर यहाँ से नहीं तो कलकत्ता से तो ऑफलाइन तो मेरा ऑनलाइन क्लास ले लिए जो भी मैं ऑनलाइन क्लास ले लिए तो टेस्ट सीरीज क्या तो आप टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन के कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, दिक्कत नहीं है. आप उसको ना फिर आप घर पे अपने OMR शीट रखा कीजिए. सो आप जो टेस्ट सीरीज है मतलब जो क्वेश्चन पेपर आएगा आप उसको क्वेश्चन पेपर की तरह ही समझिए. तो आप और अपने OMR शीट पे फिजिकली मार्क किया कीजिए आंसर्स. ऐसे हो जाएगा. थैंक यू. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम मेरा क्वेश्चन प्रीलिम्स को लेके था कि जैसे पहले बोलते थे कि PYQs आप करिए, स्टैटिक बुक करिए, करंट अफेयर जितना हो सके आप करिए और फिर पेपर दीजिए. पर इस बार का पेपर थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था. ऑल्दो क्लियर किया जा सकता है पर अब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि कोई सब्जेक्ट को आप कितना अंदर डेप्थ में पढ़ना है. तो अब सब पढ़ने के बावजूद भी लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है और पता नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट बार इसको इम्पोर्टेंस दे, एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए. See, first is if you are willing to give the exam, matlab that is a personal choice that you make कि you want to give the exam or not. So if you are determined to give the exam, और भी कितने लोग क्लियर कर रहे हैं, आप भी कर लोगे. एंड सेकंड इज कि अभी सिर्फ एक एग्जाम हुआ है तो वन कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पैटर्न. सो फॉर एग्जांपल इससे 2 साल पहले जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें पहली बार स्पोर्ट्स आया था, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे एंड दैट वाज कम्प्लीटली न्यू. तो अब देयर आर मेनी, इस साल अगेन बहुत न्यू पैटर्न था.
तो इसलिए हर बार पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इस पैटर्न के हिसाब से पढ़ के जाऊंगी और ऐसे क्लियर हो जाएगा, बट यू शुड बी रेडी फॉर इट। आपकी जो प्रेपरेशन है आप इस हिसाब से करिए, आएगा कहाँ से, करंट अफेयर से आएगा और स्टैटिक से आएगा तो वहीं से, तो आप प्रिपरेशन ही इस हिसाब से करिए कि इवन इफ द पेपर इज डिफिकल्ट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बाकी हो जाएंगे, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन निकाल कर आप एटलीस्ट अपना बेंचमार्क रीच कर लेंगे। मैम सीसैट के लिए भी पूछना था कि सारा चीज़ पढ़ने के बावजूद भी वहाँ पे थोड़ा पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस पैनिक को थोड़ा कैसे कम करें? सी फॉर पैनिक आई थिंक फर्स्ट इज अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट आप अटेम्प्ट करें। जब आप अटेम्प्ट करेंगे वही टाइम ड्यूरेशन में अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम उन्हीं सेम क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करेंगे, वो फॉर्मूले आपको आते होंगे, याद हो जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड, see panic is very normal, everyone feels panic, so but आप अपने कॉन्फिडेंस से जाएं कि CSAT तो क्वालिफाइंग पेपर है, you just have to qualify, so have that in you कि अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप इंग्लिश पे फोकस करें, रीजनिंग पे फोकस करें, अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स पे फोकस करें, उस हिसाब से आप अपना पेपर करें कि मैं क्वालिफाई अपने स्ट्रांग पॉइंट्स के बेसिस पे करूं, आप वीक से ज्यादा स्ट्रांग पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम मेरे 3 सवाल है। मैम आपका डेली रूटीन क्या था, लाइक हाउ डिड यू प्लान योर डे, और एक जीएस पेपर को ख़त्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल GS1 का नोट्स बनाना शुरू किया या GS2 का, कितना टाइम, जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना तो मुझे 1 महीने कभी 2 महीने भी, जैसे GS पॉलिटी का बनाया तो मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और विजन की जो मटीरियल है उसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैम 2 महीने लग जाते हैं। कितना टाइम लगना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर GS को ख़त्म करने में कि वो टाइम एक्सटेंड ना हो? और आपका मंथ कैसे मैम वो था कि इस मंथ में मुझे ये कवर करना है, इन्वायरमेंट करना है, पॉलिटी करना है या ये करना है? ये बहुत कन्फ्यूजिंग एक गेम हो जाता है, इसके कारण 3-4 मंथ मैंने बर्बाद कर दिए हैं इस साल के। अच्छा ठीक है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट माई डेली स्केड्यूल, आई यूज टू हैव अ वेरी बिग रफ स्केड्यूल। सो एज आई सेड 3 महीने पहले से प्रीलिम्स मतलब खत्म हो जाना चाहिए सारा सिलेबस, तो मेरा बड़ा स्केड्यूल ये होता था कि 3 महीने पहले खत्म करना है, तो इतने महीने हैं मेरे पास, किस किस महीने में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद देन वी केम टू मंथ्स एंड देन आई केम टू वीक्स एंड देन आई केम टू अ डे। सो मेरे 4 वीक्स में आज इस वीक में क्या क्या मेरे टास्क हैं उसके बेसिस पे मेरा डे डिसाइड होता था। आई डेंट यूज टू स्टडी एज पर आवर्स, आई डेंट हैव एनी फिक्स आवर्स ऑफ स्टडिंग, रादर आई हैड कि मेरी ये टास्क हैं डे की। सो इफ दे गेट कवर्ड इन 5 hours well and good, if they don't, if they take 8 hours I gave 8 hours, if they took 10 hours I gave 10 hours. So that is how you if you make schedules, that is how you make schedules. Second question was मैम मेंस की जो नोट्स बनाने हैं मैम, उसमें कितना टाइम आपको लगा? और आपने पूरा मेंस का सिलेबस, नॉट प्रीलिम्स, मेंस का सिलेबस कितने टाइम में खत्म किया खुद से, विच प्रोवाइडेड यू हैव सेल्फ नोट्स? सो जो मेंस के नोट्स बनाने हैं उनके लिए एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर द टाइम, बट इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स। लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट एंड उसकी वेटेज भी बहुत कम होती है, सो दैट इज समथिंग यू कैन कीप फॉर लेटर ऑन। अगर प्रीलिम्स का पेपर दे आए हो तब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लोगे और कवर कर लोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी। बट अगर बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट इज अ बिग सब्जेक्ट, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए यू स्पेसिफिकली स्टार्ट पहले से, ताकि आप पहले बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कवर कर लो। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, दीज आर द सब्जेक्ट्स यू कवर फर्स्ट एंड देन यू शिफ्ट टू स्मॉलर टॉपिक्स। लाइक सोसाइटी आई थिंक इज नॉट समथिंग यू हैव टू मेक नोट्स फॉर। सोसाइटी इज अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, सो क्या नई स्कीम आई उस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए नोट्स तो ऐसे मतलब वो तो साथ साथ बनेंगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते नोट्स बनेंगे। मैम आपके बेसिक सोर्स विजन के क्लासरूम नोट्स थे बस? फॉर एथिक्स यू हैव टोल्ड अबाउट रेड बुक, यस, तो वो रेड बुक सोर्स और क्लास के नोट्स? It depended on the subjects. For example, for world history, I did not read any book because उसका weightage भी इतना कम है, तो बुक क्यों पढ़नी है? तो उसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं मतलब कोई बुक नहीं पढ़ी थी। फॉर पॉलिटी आई रेड लक्ष्मीकांत, तो पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपके क्लास नोट्स आपको लग रहे हैं सफाइस कर रहे हैं तो डोंट रीड मोर। आई वुड रादर सजेस्ट जितना कम आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ पाएं, जो आपके पास नोट्स हैं आप उनको बार बार रिवाइज करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही किया था, मैंने एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटीज उठा ली एंड आई थॉट कि ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है। दैट वाज 1 month बिफोर माई प्रीलिम्स। दैट इज नॉट द टाइम फॉर रीडिंग न्यू थिंग्स, दैट इज ओनली द टाइम फॉर रिविजन। So you read less books, but you revise more times. Ma'am, thank you so much. Thank you. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम लक्ष्मीकांत कैसे कवर करें और उसमें कौन से टॉपिक है जो पढ़ने चाहिए, जो नहीं पढ़ने चाहिए, और उसके शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाए?
लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े? कवर करे पूरा, और उसके कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं उसके। उसके बहुत कम टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ने, तो आई वुड रादर से आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़िए। और कैसे कवर करें, मैम जैसे कि उसमें प्रेसिडेंट का अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का अलग है। हाँ, तो उसके लिए आप ऐसा करिए कि जो पैरेलल बॉडीज है ना स्टेट और सेंटर की, वो आप इकट्ठे पढ़िए। जैसे आप प्रेसिडेंट साथ में पढ़िए, वाइस प्रेसिडेंट साथ में पढ़िए और गवर्नर साथ में पढ़िए, ये 3 इकट्ठे पढ़े जाएंगे। ऐसे ही अगर आप पीएम पढ़ रहे हैं तो आप साथ में सीएम पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आपका जो ओवरलैपिंग है स्टेट और सेंटर का, वो सब साथ में पढ़ा जाता है। जो पार्लियामेंट है दैट इज अ बिग आई थिंक चैप्टर, सो दैट इज अ चैप्टर जिसको आप, मैं ऐसे नोट्स बनाती थी कि मैं पहले सिर्फ पढ़ती थी बुक 2 बार, आई ओनली यूज टू हैव अ रीडिंग ऑफ अ चैप्टर और द बुक इटसेल्फ। 3rd रीडिंग में यू स्टार्ट विद पेंसिल और पेन, एंड देन 4th to 5th रीडिंग में यू हाईलाइट व्हाट यू हैव रिटन विद द पेंसिल और पेन। इससे आपकी पूरी बुक हाईलाइटेड नहीं होगी। थैंक यू। इससे आपकी पूरी बुक हाईलाइटेड नहीं होगी। सो उसके बाद देन यू कैन मेक वट एवर शॉर्ट नोट्स इफ यू वांट टू मेक। सो दैट वाज माय वे ऑफ स्टडीइंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। Hello. Good afternoon, ma'am. Actually, my main doubt is about answer writing. So basically, from all this discussion, I get to know that we have to remember a lot of things and we have to recall it in the exam. But जो 7 और 5 मिनट का टाइम होता है, वहाँ आप कैसे उसको रिकॉल करते थे? आपने पहले से कुछ ड्राफ्टिंग करके रखी होगी कि लेट से बुद्धिज्म आ गया तो मैं इमीडिएटली आई विल पुट दिस बॉडी, कंक्लूजन और जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ऐड अप कर दूंगी ताकि बन जाए। तो वो शॉर्ट नोट्स आपने कैसे बनाए थे? क्योंकि अगर मैं बनाने लगता हूँ शॉर्ट नोट्स तो मुझे ये नहीं पता चलता क्या इसमें लिखना है क्या इसमें छोड़ना है, और वो मतलब 20 या 10 पेज की शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। बट मोस्टली जिस तरह टॉपर्स रिकमेंड करती है कि A4 शीट पे आपके पूरे पेज आ जाना चाहिए, लाइक बुद्धिज्म इन 1 पेज, जैनिज्म इन 1 पेज, ऑल दिस थिंग। तो आपने कैसे उसको याद किया इतना सब कुछ, और इमीडिएटली क्या मतलब कैसे आप रिकॉल कर पाते हैं पेपर के अंदर कि मैं ये लिखूंगा यहाँ पे, ये कोट्स मेरे दिमाग में आने चाहिए, ये एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, वो सब चीज़। सो एज आई सेड, आप अगर पहली या दूसरी रीडिंग में नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स बहुत बड़े बनेंगे। आप 5वीं 6ठी रीडिंग में जब नोट्स बनाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको होता है कि यार ये तो याद ही है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और ये मुझे ऐसे ही याद है, तो उसके नोट्स फिर से नहीं बनते। नोट्स बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के, कीवर्ड्स के, और सबसे डिफिकल्ट जो आपको लग रहा हो कि ये मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ, 6th रीडिंग में भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, उसके नोट्स बनते हैं। तो जब आप वो नोट्स बनाते हैं, आप एक लेआउट बना लेते हैं। जैसे अगर बुद्धिज्म की हम बात करें, आपका एक बेसिक लेआउट होगा विच इज अ प्री प्लस मेंस लेआउट। यू डोंट स्टडी फॉर प्री एंड मेंस अलग अलग, तो आपका एक पूरा लेआउट होगा जिसमें सारी काउंसिल्स भी इकट्ठे मेंशन्ड होंगी। तो वो मेंस में पूछा जाएगा तो भी आप वही लिखोगे, प्री में पूछा जाएगा तो भी वही आपके नोट्स हैं। ऐसे कर करके it is very easy to make Buddhism notes in 1 page only. I have also made in 1 page. So, for example, मतलब मैं in general बता रही हूँ कि अगर आप exactly जो question ने पूछा उसके notes कभी भी नहीं बना सकते। Your basic notes for you have basic content. आप उसमें add in करते हो, and as you start practicing, as you keep writing questions, answers, धीरे 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 आपके दिमाग में वो चीज़ें याद रहने लगती हैं। एज आई सेड, मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी मेंस के लिए, तो अगर कोई क्वेश्चन दोनों टेस्ट सीरीज में रिपीट हो रहा है तो दैट वाज माय क्यू ऑफ थिंकिंग कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं अलग से और 1-2 बार रिवाइज कर लेती थी कि अगर ये आएगा तो वो मुझे आना चाहिए, मुझे उसका सारा रिवाइज्ड कंटेंट भी याद होना चाहिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। Hello, ma'am. Am I audible? Yes. Ma'am, we have one question from the online students. The question is, can you please recommend standard books for the public administration preparation? For public administration, I followed class notes and I read Prasad and Prasad for Thinkers. I have not read any other book. लाइक जिस तरह आप टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो आपको 7 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लाइक क्वेश्चन केम, व्हाट इज द रोल ऑफ पाला डायनेस्टी इन बुद्धिज्म, या इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म इन अदर कंट्रीज लाइक सॉफ्ट पावर। तो व्हाट क्लिक इमीडिएटली इन योर माइंड? आपने जिस तरह पढ़ तो रखा है बुद्धिज्म ऐसे ऐसे था, ये रोल हुए, फिर व्हाट कम इन योर माइंड? आपने कितनी बार उसको किया होगा ताकि इमीडिएटली क्लिक इन योर माइंड? When you start writing answers, like when I wrote my first full paper, any paper, it took me 4.5 hours to complete it. You have 3 hours in the paper. So that is something you learn dhire dhire. After my prelims got cleared, that is when I started writing full length answers. So before that I had not even written it in 3 hours. So I started with 4.5 hours, and for that you think, क्योंकि एकदम से आंसर नहीं आता है, आप धीरे 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 लिखते लिखते आप 3 आवर्स पे आते हैं।
सबसे पहले जब आप 4.5 घंटे लेकर चलते हैं तो आप सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि मेरा आंसर बेस्ट होना चाहिए, मेरे को ये पॉइंट भी ऐड करना है, मुझे ये पॉइंट भी ऐड करना है। फिर धीरे धीरे वो जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में थोड़ा स्टोर होते जाते हैं। देन यू स्टार्ट शिफ्टिंग कि अब मुझे इस पे फोकस करना है कि मेरा पेपर 3 घंटे में खत्म होना चाहिए। देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। उसमें थोड़ा क्वालिटी कम भी होगी तो कोई बात नहीं। और मैम ये ब्लफ वगैरह करने हैं, जिस तरह कोई कमेटी है इलेक्टोरल रिफॉर्म की, जिस तरह गोलकनाथ कमेटी है, तो अगर कुछ भी पूछा था ईवीएम से रिलेटेड, आई विल कोट लाइक कि गोलकनाथ कमेटी रिकमेंड दिस, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो, जस्ट टू शेयर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। नो प्लीज डोंट ब्लफ। एंड आपको काफी ऐसी कमिटीज मिल जाएंगी जिनका कंटेंट काफी सारी जगह चल जाता है। जैसे सेकंड एआरसी में बहुत सारी जेनेरिक रिकमेंडेशंस हैं। यू नीड टू जस्ट लुक एट सेकंड एआरसी 2 to 3 टाइम्स टू नो कि ये उसमें लिखा था, तो वो ब्लफ भी नहीं होगा क्योंकि उसकी बहुत जेनेरिक रिकमेंडेशंस हैं, सजेशंस हैं, तो वो ब्लफ भी नहीं होगा और आपने सेकंड एआरसी मेंशन भी कर दी। तो आप ऐसी कमिटीज उठाइए, आप ऐसी कमिटीज मत उठाइए जिन्होंने सिर्फ एक रिकमेंडेशन दी है, तो फिर वो आप सिर्फ एक ही आंसर में लिख पाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू Ma'am, hello, ma'am. Hello. Ma'am, you mentioned about Shruti Sharma's answer copy. So my question is that how much more corpus copy did you refer to develop your answer writing skills? I used to refer to a lot of topper copies because that is how I got my layout for ethics. कैसे आंसर लिखना है, जैसे I told you कि you make pros and cons when you write arguments in ethics in case studies. So that is something that you develop once you see, because when you start off you are a novice, you don't exactly know कि इसमें कैसा layout होना चाहिए. So you look at topper copies and I didn't focus much on GS copies because GS में हर एक टेस्ट सीरीज में आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको लगेगा आप इसका भी मैटर इकट्ठा कर लो। तो जीएस कॉपीज में कम पढ़ती थी, मैं एथिक्स कॉपीज पढ़ती थी, ऐसे कॉपीज पढ़ती थी, सो उससे और ऑप्शनल की कॉपीज पढ़ती थी। Ma'am, how you were supposed to refer to those copies? I mean, did you write those answers by yourself and later on you refer to those answers and compare your answer with their answers also? No, I didn't do that. For example, if I've seen a copy and I see some diagram that is very good and I can use it in my answers, I used to copy that diagram. I used to write it in my notes that this is the diagram, and if a question comes on this, then I'll be making this diagram for sure. For example, citizen charter. I used to if a question on citizen charter will come, I took it from a topper's copy. I saw a diagram being made of citizen's charter, just a sample of citizen's charter, how it looks. It had name, date and stuff. So I took that. And if a question would come, I used to write that. So the main thing is practice. When you start practicing, you don't compare your answer with them. You just practice enough to know that if a question is coming, there's this diagram or there's this quote or there's this example that I'll be mentioning if a question on this comes. Okay, ma'am, can you please name some of those toppers copy which you might have referred while your preparation? Specifically. One is Shruti Sharma ma'am, and one is Vishakha Yadav ma'am. Her ethics copies were very good. Okay. I also referred a few more, but I'm not able to recall any names at the moment. And one more small question, please. Ma'am, in your GS4 answers, I saw that you wrote quotes also in the intro also and in the conclusion also. So what problem I am facing is that while writing the answer, I'm not able to recall exactly that, okay, later on after coming home, I'm recalling that, yes, I might have written that quote also over there. So how to overcome this problem? So that the content which I'm having in my notes, I'm able to exactly write that content in my answer copy. How to overcome that barrier? Okay, so one thing that I used to do was if I had online test series, so I used to write at my home, or even if offline, they courier you, so you can write at your home as well. So if I was writing at home, for example, if there's a quote on ethical governance that I know that I have this quote in my notebook, but I'm not able to recall it, I used to open my notebook in the starting of my answer writing journey. I used to open my notebook, I copied that quote, and then I submitted that answer. So when I write that quote in that answer, it somehow gets into my memory. I knew that I copied it in that answer, but later on it starts getting into my memory and I don't have to copy anymore. So that is one thing you How can do. much tests will you suggest that, okay, I can give 4 or 5 or 6 tests in this manner by copying from my own notes deliberately? I think that should be done only in the starting of your answer writing journey. Not 3-4 tests roughly, yeah? Yes. Okay. Thanks a lot, ma'am. Thank you. हेलो मैम। हेलो मैम, पबेट के आंसर्स कैसे लिखें एंड उसको इम्प्रूव कैसे करें? पबैट के आंसर्स लिखने के लिए एज आई सेड, आप स्टार्ट करें थिंकर से। थिंकर भी मेंशन करिए, थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है ये भी मेंशन करिए। ये हुआ पहला, और उसके बाद आप पॉइंटर्स प्लस पैराग्राफ्स दोनों मिलाकर अपने आंसर्स बनाइए। तो आपके आंसर्स में आपका इंट्रोडक्शन पूरा एक पैराग्राफ होगा, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, उसमें आप फिर एग्जाम्पल्स के पॉइंटर्स डालेंगे। ऐसे करके अपने आंसर्स को बनाइए।
उसको मैम इम्प्रूव कैसे करें? इम्प्रूव आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे इम्प्रूव होंगे. पबैड की भी बहुत सारी टॉपर कॉपीज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं. पबैड में भी आप डायग्राम जरूर ऐड करिए, जितने हो सकते हैं, जहां हो सकता है वहां डायग्राम ऐड करिए. ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए इम्प्रूव हो जाएगा. And I also wanted to add something else, that for answer writing, I started answer writing even before I had given my first prelims. There's a website called Insight IS. I only knew that at the time. They have free answer writing programs. So daily, the newspaper that comes, they make questions from newspapers and they write GS1 make question, GS2 make question. So they used to put up like 4 to 5 questions daily. But as per my convenience, I used to do however I could. Like for example, I usually used to do 1 question per day because I was completely new in the UPSC journey. So I was just writing to get into the habit of writing, to know कि आंसर कैसे लिखा जाता है, इंट्रो कैसे बनता है, कंक्लूजन कैसे बनता है. उसके लिए मैं एक दिन का एक आंसर लिखती थी. जो वो पोर्टल है उस पे और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, तो दे गिव फीडबैक एंड यू गिव फीडबैक टू देम. तो अगर आप उनका आंसर पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा यार इसने इस आंसर में एक डायग्राम ऐड कर रखा है, तो अगली बार मुझे ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये डायग्राम ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. तो आई वुड से start answer writing from day 1. If you're starting today, start today. Write just 1 answer per day. That is also enough. But even then, आपको 1 महीने में भी बहुत difference दिखेगा अपने answer writing की quality में. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I'm having difficulties in selecting an option subject and wanted to ask, ma'am, अभी कल से ही क्लास चालू हुई है, तो अभी थोड़ा वेट करूं कि सिलेक्ट करूं जो भी, यानी मेरे को शोशो और एंथ्रो में यानी वो दोनों सही लग रहे हैं, तो अभी इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर लेना चाहिए या वेट करूं जीएस क्लासेस में? I think that is more of a personal choice, but see मेरे केस में ऐसा था कि in my first attempt I chose a different optional. I chose zoology only because I was from science background. I had not graduated in zoology. I just thought it really interested me, but that was a bad choice for me because I had not graduated in it, and उसमें बहुत सारे diagrams बनाने होते हैं, and mains paper are already very lengthy. So in my first attempt, I thought after I had given my prelims, I realized that it was a very bad choice. And even if I clear my prelims, I don't know if I'll be able to clear my mains. So thankfully or whatever, I did not clear my prelims and I shifted my optional then. तो तब तक मैं अपना GS पूरा पढ़ चुकी थी and I knew कि मुझे पॉलिटी पसंद है, और PSIR मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे पता था कि मुझे IR में इतना इंटरेस्ट नहीं है. So मेरे लिए मेरे पास वो नॉलेज थी कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद. बट इफ यू वांट टू चूज राइट नाउ, आई थिंक आप सिलेबस पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़िए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड इफ दैट इंटरेस्ट्स यू देन यू मूव अहेड विद दैट ऑप्शनल. थैंक यू मैम. थैंक यू. मैम, आर्ट एंड कल्चर कैसे कवर करना चाहिए, किस बुक से या फिर क्लासरूम मटेरियल इंटीग्रेट करके? Art and culture, I think NCERTs are the main source for art and culture. वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा मैटर है उसके लिए. Congrats, ma'am. Thank you. Is coaching really necessary to crack this exam? See, I think it is more of a personal preference. If अगर आप कोचिंग में आ सकते हैं और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, तो why not? It gives you a good base because I was a science student and humanities was a completely different game for me. So economics was new, polity was new. So उन्होंने मुझे एक बेस दे दिया कि मुझे खुद से सोर्सेज नहीं ढूंढने. मैं क्लास नोट्स, मैंने इकोनॉमिक्स में भी कोई बुक रेफर नहीं करी है, मैं सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के गई फॉर बोथ माई प्री एंड मेन्स एंड करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल चॉइस. अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो देर आर अ लॉट ऑफ फ्री ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल दैट यू कैन यूज, एंड उसके अलावा there are so many topper copies, there are so many telegram channels that are now available of toppers only, so you can use all of that. Thank you. Hello ma'am. Ma'am, how you used to make your newspaper notes or current affair notes? So this was also written in my tips. So I used to make digital notes. I had an iPad and I used the Good Notes app, and my digital notes were made. I used to take 1 to 1.5 hours for newspaper every day, and
I think once you start reading newspapers, you have a fair idea कि कौन सा page important है, कौन सा नहीं है. So explained is very important. तो आप उनसे भी short notes बनाते हैं. You don't write the full lines. You just write the keywords. किसी भी चीज़ की बात हो रही है तो एक कमिटी मेंशन हुई है तो छोटा सा कमिटी लिख लिया. तो you make digital notes. And अगर वो चीज़ फिर से न्यूज़ में आई है तो मेरे लिए digital notes इसलिए हेल्पफुल थे. अगर वो फिर से न्यूज़ में आती थी मैं उसी में चेंजेस कर लेती थी. डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है. I used to do in that. So I do like I just cut out the article and paste it in the good notes. So I should only write the short notes on analytical part. Yes, don't copy and paste. So when you copy and paste, you'll not remember it because you just copied it and pasted it. You should write it by your own hand. You write it down and if you copy paste the whole article is not useful. You just write down the keywords, the pointers that you want to note down. So that takes more effort, but that is better in the longer run. मैम जैसे कि मेंस के लिए अलग से नोट्स बनाने चाहिए या क्लास नोट्स इनफ होते हैं? आप मेंस और प्रीलिम्स के एक ही नोट्स बनाइए और क्लास नोट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो तो क्लास में एक्सप्लेन करते हैं सारा कुछ. तो आप अपने क्लास नोट्स 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए. उनमें सिर्फ कीवर्ड्स होते हैं. आप अगर कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए लिखवाया है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सब अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं करते. I couldn't hear you, sorry. Economy के लिए, as I said, I only used class notes. I didn't have any other resources. You use class notes, you use newspaper, you use monthly magazines or PT 365, Mains 365. मैम आपने उसके लिए बुक्स? Yeah, I was a Vision IA student. नहीं, at my time there were another sir. Hello ma'am. हेलो गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon. मैम मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड पबैड ऑप्शनल. कुछ दिन पहले मैं एक ओरिएंटेशन क्लास में गया पबैड ऑप्शनल, मतलब वो कोचिंग बेस्ट है आई थिंक पबैड ऑप्शनल के लिए. तो लाइक ओरिएंटेशन क्लास था तो सर ही वाज टेकिंग द क्लास एंड ही शोड द ग्राफ ऑफ पबैड ऑप्शनल लाइक इट वाज गोइंग डाउन एंड I was at the verge to select the pubmed optional but I didn't and मतलब कल ही शायद वो बैच स्टार्ट हो गया है. तो मैम I have core interest in pubmed but the success rate in recent last 3 to 4 years बहुत ही कम हुआ है. तो मैम इस केस में मतलब इंटरेस्ट तो है मगर सक्सेस रेट को देखते हुए मैं थोड़ा डर गया हूँ. मतलब ऑप्शनल पबैड लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? So in my case also, मेरे को भी यही सुनने में आया था कि उसका कोई अच्छा स्कोप नहीं है. This was my first attempt with public administration. I got the highest marks in public administration this year. So this was my first attempt and in any case, I think if you are interested in that subject, तो आप बेस्ट सब्जेक्ट्स भी उठा लेंगे, उनमें भी लोग बहुत कम मार्क्स लाते हैं अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते. तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आई थिंक यू शुड गो अहेड विद इट. आप मे बी आपको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी होगी किसी अदर ऑप्शनल से बट इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन राइट गुड आंसर्स यू विल गेट गुड मार्क्स. ओके मैम. मैम स्टडी मटेरियल क्या था मतलब पबैड ऑप्शनल के लिए? आई यू सेड ओनली यू रेफर प्रसाद एंड क्लास नोट्स. Yeah, I was a student of Trust IS. Okay. The online coaching. I used that class notes. I used Prasad, and apart from that, I don't think there were any other notes. I mean, if newspaper, second ARC is a great source. Yeah. Thank you. And ma'am, some toppers suggest that Arora and Goel or Mohit Bhattacharya is important for PubMed, I think. Yeah, I also heard that, but no, I didn't use it. Mohit Bhattacharya is a very complex book, so I didn't prefer it. And I used second ARC. Thank you so much. I used second ARC. If there's something in the newspaper that you can add, if a commission is coming, committee is coming, anything, you can add that. But that's all. No other books. Ma'am, I don't recommend any other books. Online student of Trust IAS. Yes. Ma'am, is there any other coaching that you can suggest? I mean, I've not been a student, so but you can surely inquire more and whichever you find good. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, hello. Hello, ma'am. Hi. Ma'am, for science and tech, what were your newspaper or current affairs did you do?
I'm sorry, I'm not able to hear you. Ma'am, for science and tech, did you do newspaper and others, or what were your sources? Yeah, I think science and tech is also a very first, it's a very small subject, and second, it's a very dynamic subject. So I don't think there are any specific books that I would recommend for it. Monthly magazines, when you read monthly magazines, they also cover a topic in depth. For example, if a missile is being talked about, they'll give you a brief about the different missiles that are present. So you cover your static content from there as well. If you have joined a coaching, then there are class notes, static class notes. But if you don't have any coaching, even then newspaper and magazines, I think those are enough, because they cover it in detail as well. The explained page that comes, it gives a detailed discussion about whatever is being talked about. So no book. Hello, ma'am. Ma'am, there was one small request. Ma'am, can you please share your diagrams and maps which you have prepared over some online platform? Yes, I do have a Telegram channel, but I mean, I would it's at Khushboo AIR 139. Thank you. Thank you. मैम इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक्स हैं, मतलब मैम जैसे क्लास नोट्स हैं, और मैम कोई कोई और अलग अलग रेकमेंड करते हैं, कोई बोलता है मृणाल की फॉलो कर लो, कोई बोलता है श्री रामा यस की फॉलो कर लो. आपने कौन सी फॉलो की थी मैम इकोनॉमिक्स के लिए बुक? मैंने सिर्फ क्लास नोट्स फॉलो किए थे. यस मैम. तो मुझे कोई बुक के बारे में आइडिया नहीं है. और मैम एनवायरनमेंट के लिए? एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने सिर्फ क्लास नोट्स फॉलो किए थे और मैगजीन्स. थैंक यू मैम. मैंने इस बार का प्रीलिम्स दिया एंड अभी 14 दिन हो गए, कुछ नहीं पढ़े, तो हाउ शुड आई प्लान माय होल ईयर? How was the prelims this year for you? It wasn't good. No, okay. But I was satisfied with what amount of preparation I did, because I did with simultaneously 2 classes a day and then preparing for prelims. So you didn't clear this year? No. Okay, and you've done the GS basics. Yes. So you start again, you read the in fact it is much better for you, you've already read all your basics, right? So you revise them, you make shorter notes, you make notes out of what you've read, better notes, shorter notes, and then you revise that. You also focus more on your optional because you have the time. Ma'am, for optional I didn't do my paper last year. I just completed my paper 1. So now you have time for that. You should cover your optional first, because once you clear prelims, you won't have the time to read your optional. That is the time for revision only. So now you have a year. So start with your optional, cover your optional first, then start revising your GS. Your prelims and mains go together. Start writing answers, like you write 1 answer per day. You start with that and start writing answers, but at the same time start giving prelims test series. Like there are year-long test series available. Should I give both mains test series as well as prelims test series simultaneously? You start mains test series after prelims. So I would not recommend mains test series, because again, as I said, you won't be able to complete a paper in 3 hours, and it's not needed right now. As in the sectional tests? Yes, you can give small sectional tests. Yes. And for prelims, should I start giving tests after February or January? And for prelims, there are year-long test series available. They have subject-wise tests first, so you start giving them now, and then later on you shift to full-length tests. Okay, ma'am. And second thing is that how do I approach essay writing? I told you so much about essay writing. That is how as you in approach it. Should I give it every weekend, or should I? Yes, you can. You can give. You can write 1 essay per week. Per week. At least, or two. You can shift to 2 essays per week later on. But right now, you can start with 1 essay per week. Yes. And ma'am, when you see a topper copy, what do you analyze from that? Like what all things you gain, or what all things you see from the topper copy, or what should one should see from a topper copy? So if there's some different diagram or some different example, or for example, in your own notes you have less content on some topic. For example, you have less content on corporate governance. So then you if there's a question on corporate governance given, you take matter from it. You take whatever examples are given, what commissions are given. हेलो मैम जीएस के लिए टॉपिक वाइज नोट कैसे बनाए? जैसे उसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना है, उसके बाद फिर स्कीम्स, वेरियस कमिटीज के रिपोर्ट्स को
इंक्लूड करना है, तो उसको होलिस्टिक वे में कैसे मैं इसके लिए नोट्स बनाए? आई थिंक आप अपने स्टैटिक नोट्स अलग बनाइए, क्योंकि वो तो वैसे ही रहेंगे, तो आपके स्टैटिक नोट्स अलग होने चाहिए। और आपके करंट अफेयर्स नोट्स साइड बाय साइड चलते हैं। सो व्हेन यू मेक करंट अफेयर्स नोट्स, वो नोट्स भी ऐसे बनने चाहिए, दे शुड बी बेस्ड ऑन पॉलिटी, लाइक यू राइट पॉलिटी एज अ हेडिंग एंड देन यू मेंशन ऑल द करंट अफेयर्स नोट्स, ताकि अगर आप पॉलिटी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपने अपना स्टैटिक रिवाइज किया, आपने अपना पॉलिटी का करंट अफेयर्स रिवाइज किया, एंड देन यू गिव द पेपर। ओके, थैंक यू। Hello, ma'am. Hello. First of all, ma'am, congratulations. Thank you. Ma'am, my first question is, ma'am, how do you approach in your second attempt after failing prelims in first attempt? For your second attempt, how do you approach, and what you have changed in your strategy? I talked about what I changed in my strategy, so I wouldn't be repeating that. But what I did was I didn't get bogged down by it. Like, it's okay to fail an attempt. It is a very difficult paper. It is one of the toughest papers in the world. And I think we are all courageous enough to already attempt it. So one should always have that in mind. If you have thought कि करना है तो करना है, अभी एक attempt में तो कोई बात नहीं, बहुत लोगों का एक attempt में नहीं होता. It's not something to get bogged down by. Thank you, ma'am. Heartiest congratulations, ma'am. Thank you. Ma'am, my first question to you is that I have seen your ethics answer copy. There you have written Hindi quotes in English translation. That was based on some moral values, some ethics. I want to know that you have written Sarve Sukhina Bhavantu. So these type of quotes, they are really very impactful. So I want to know that from where did you get these kinds of quotes? Did you ever read Bhagavad Gita, or from where did you find it? Firstly, that was not my ethics paper, that was my essay paper. Okay. I did not write anything in Hindi in ethics or any other subject, only in essays. Second, all of us have varied interests. If you have never read Bhagavad Gita, I would not ask you to read it now, because you don't have the time. And I have also never read it. I mean, I would want to start now. But you gather it from a lot of sources. Either you read topper copies, or sometimes you're just scrolling and looking at quotes. So in my free time, I used to search for quotes. If I'm searching for quotes on transparency, I'm searching for quotes on integrity. So when you are searching, sometimes you find these quotes and you write them down. Okay. In Hindi also and English also? If you're writing a Hindi quote, you always have to follow it with an English translation. Okay. So, yes. And what were the books recommended by you for geography? For geography, I read G.C. Leong and NCERTs. Very important. Yes. Okay. Thank you. मैम, करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर के नोट लिए तो अलग अलग कॉपी GS1 और GS2 इस साइज पे लिखना है, और एक साथ लिखना है? GS1 GS2 के हिसाब से आप सेपरेट ना करें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ओवरलैप होते हैं. जैसे GS1 में भी सोसाइटी है और GS2 में भी सोशल जस्टिस है, तो ये काफ़ी ओवरलैपिंग टॉपिक है. तो आप उसकी जगह सब्जेक्ट्स के हिसाब से नोट्स बनाएं. जैसे सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के नोट्स इकट्ठे होंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इकट्ठे होंगे, तो आप ऐसे नोट्स बनाइए, GS1 GS2 के हिसाब से नहीं. Okay, ma'am. And there is one more question. Ma'am, for current affairs, do you refer any online platform? For current affairs, as I said, I used to read the monthly magazines of Vision IAS itself. Then when my prelims came close, I used to read PT 365. Mains came close, I read Mains 365. But apart from that, your self notes are made from newspaper. I used to refer to newspaper, Indian Express only. No online platform? No. Okay, thank you. Any other questions? No. Okay, then I only have a few small tips that I'd like to share with you, and we'll end our segment. One is the Pomodoro technique. If you don't feel like studying, which happens many times, the Pomodoro technique is you study for 25 minutes and you take a 5 minutes break. That is how you train your mind that I'll be studying for 25 minutes and then 5 minutes I have a break. So if you're not feeling motivated someday, if you don't want to study, that is how you can study. Second is, as I said, I made digital notes and they were very helpful for me. There's Good Notes app. You can use that if you want to make digital notes. Next is, people ask, what do you do in free time? I used to go out once in 2 weeks. So please don't take too much stress. You should be going out, you should socialize, you should sit with your family. And apart from that, when I used to have my lunch, dinner, whatever, I used to watch old sitcoms, something that I've already watched.
sitcoms because they are very light, they are comedy. So you're already very stressed. Please don't watch crime and all of this. They'll only stress you more. And old because there was no suspense left. If I'm watching something that I've already watched, after 20 minutes, if my lunch is over, I will switch off the TV and I'll say, chalo, padhai karne baitte hain. But if you're watching something new, you'll feel like, ab kya hoga, aage kya hoga. So don't watch that. If you like something that you've already watched, continue that. And two things that I'd like to say. One is self-honesty. When you're sitting inside the room, no one is looking at you. Your parents don't know, your family, your friends, no one knows if you're studying or not. Only you do. So self-honesty is the most important. Know that you are studying for yourself. It is you who will finally get that position, that responsibility that you aim for. And next is sacrifices. My journey was 3 years long. I hope your journey is even shorter than mine, but in case it is not, or even no matter how short your journey is, it feels very long. Every day you sit down and study, your friends are going out, your family is going out, a lot of things are happening and you feel like you're sacrificing this and that, and you're sacrificing new series, you're sacrificing your hobbies, everything is sacrificed. But I think from my personal experience, I would like to say, when you finally achieve your dream, it is a feeling beyond words. So do it for that day. Sacrifice whatever you can. Don't go out. Less parties, less outings, less series. All of that will come back. I have all the time now to watch series, to read novels. I have so much time. Sometimes I'm like, अरे अभी सोने का मन नहीं है, चलो अब कुछ लगा लिया, अब कुछ कर लिया. You will have that time too. So leave it for that day. Leave that series, leave that outings. All your sacrifices will truly mean something one day. So, and I would just like to add a quote that I used to put on my almiras. That is, if it wasn't hard, anyone would do it. It's the hard that makes it great. The exam is tough, but so are you. With that, I'd like to end my session. Thank you so much, everyone, for joining in. I hope it was helpful.